हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GUI बेस्ड वेदर एप्लीकेशन के बारे में। द होल पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन इज टू बिल्ड आउट अ सिस्टम जिससे हम किसी भी लोकेशन का लाइव वेदर डिटेल्स को फेच आउट कर सकें। सो लेट अस सी हाउ दिस एप्लीकेशन वर्क्स। लेट मी रन इट एंड दिस इज हाउ दिस एप्लीकेशन लुक्स लाइक। यहाँ पर हमें बस सिटी का नाम एंटर करना है जिसका हम वेदर फेच आउट करना चाहते हैं। सो लेट मी राइट पठानकोट, लेट मी क्लिक ऑन चेक वेदर and this is the details जो इसने fetch out करी हैं। Currently the temperature of Pathankot is 19 degrees Celsius which feels like 18 with 39% humidity and 100% cloud. So that is the whole functionality of this application. Now without wasting any time, let us start building this one. So here we are on our PyCharm IDE. Now let us start the project by installing and importing all the necessary modules. And for that let's go to terminal and यहाँ पर हमें लिखना है pip install request। इस मॉड्यूल का हम लोग यूज करेंगे to send data request to our desired website। Once installed, let us import all the necessary modules and सबसे पहले हम लोग import करेंगे Tkinter को by writing from Tkinter import star। Tkinter का हम लोग यूज करेंगे to create the GUI of our application। Now let us import request। Let us also import JSON and from datetime let us import datetime। After importing all of them, let us create our main window by calling tk function और इसको मैं initialize कर रहा हूँ in a variable named root। Let us set the geometry of this window to 400 cross 400। Now let us write root.resizable and let us set its value to 0,0 which means our window will be of fixed size। इसको हम लोग change नहीं कर सकते हैं। Now let us set its title to Weather App Project Guru। Now let us call our main loop and let us run it। So this is our main window with the geometry as 400 cross 400 and title as Weather App Project Guru। And because resizable को हमने 00 set किया था, that is windows को एक definite size दिया था, so we cannot resize this। Now इस project में we will be using OpenWeatherMap API। So let us see how to get your API key। So go to this website openweathermap.org and यहाँ पर you have to sign in। So let's click on create an account and यहाँ पर आपको अपनी details डालनी है। So let me enter my username, let me enter my email and a password as well। यहाँ पर you have to agree to their conditions and ये सब conditions optional है। So अगर आप लोग चाहे तो टिक कर सकते हैं, बट अगर आप लोग चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। So let us click on create account। यहाँ पर आपको कंपनी नेम एंटर करना है if you are working with a company and because मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ so I am leaving this and in purpose we will go to other। Let's click on save। So after signing into this website, you have to come here and यहाँ पर आपको API पर क्लिक करना है। यहाँ पर you can see there are a number of different APIs available for different functions and because हमें current weather data fetch out करना है, so we'll click on current weather data API doc। यहाँ पर आपको API key पर क्लिक करना है and this is the API key that you will get। इसका नेम एज ऑफ नाउ डिफॉल्ट है, आप लोग चाहे तो नेम को चेंज कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम डूइंग इट प्रोजेक्ट गुरु। एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट दिस की। सो दैट इज हाउ यू कैन जनरेट योर OpenWeatherMap API key। Now let us create some necessary widgets of our application। So let us create our label widget by writing label keyword
Label is a widget जिसमें as per the requirement developer कुछ भी ऐड कर सकता है, but the user who is using the application cannot make any change into it. So here is a label जो मैंने create किया है and इसको मैं store करूंगा root पर, and इसमें मैं user के लिए एक informative text message drop करूंगा which will be enter city name, जिससे user को पता चल जाएगा that he has to enter the city name here. So let us set its font to Arial, size to 12 and style as bold. And इसको मैं initialize कर रहा हूँ in a variable name city. Now guys, Tkinter में हमने पहले भी बहुत सारी GUI based applications बनाई है जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा. एंड उन वीडियोस में मैंने बताया था that in Tkinter we work on different layers and in order to get our output हमें सभी layers को merge करना पड़ता है. And to do that we have two main methods which is pack and grid method. एंड हमारी पुरानी वीडियोस में हमने इन दोनों मेथड्स के साथ साथ एक और मेथड दैट इज प्लेस मेथड का भी यूज किया था. सो इफ यू वांट टू सी हाउ टू यूज देम यू कैन चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ इन दिस वीडियो लेट अस स्टार्ट विद द इजीएस्ट मेथड दैट इज पैक मेथड. एंड पैक मेथड को यूज करने के भी देयर आर टू वेज. इधर हम लोग चाहे तो वी कैन यूज इट बाय राइटिंग वेरिएबल नेम ऑफ द विजेट एंड डॉट पैक, और वी हैव वन मोर वे टू डू इट and that is कि हम लोग यहीं पर डायरेक्ट पैक लिख सकते हैं. So let us pad it along y-axis by 10. Now after creating this widget हम लोग एक और widget को create करने वाले हैं and that is entry widget. And entry widget को create करने के लिए we use entry keyword and इस widget का हम लोग use करते हैं to take input from user. So let us place our entry screen on root with the width as 24. Now I'll take the user input with the font as Arial, size as 14 and style as bold. Now let us pack this one as well and इसको मैं store कर रहा हूँ in a variable name city input. So let us see how it looks now. So this is how it looks. This is our label and this is our entry screen जहाँ पर user कुछ भी add कर सकता है. Now once we have the entry screen जिसमें user city name को enter कर सकता है, let us create a button जिसको click करने के बाद our application will fetch out the weather details of that city. And we have button keyword to create a button. इस button को हम लोग place करेंगे root पर with text equals to check weather, font of the text as Arial and style as 10. Now बटन की foreground को मैं सेट कर रहा हूं as black and background को as light blue. And also I'm padding it with 5 along both x and y axis. Now इसको मैं initialize कर रहा हूं in a variable name btn and इसको मैं pack कर रहा हूं with pad y equals to 20. Now let us create a text field जिसमें हमारा output display होगा and we'll do that by using text keyword. इसको भी हम लोग place करेंगे root पर and let its width be 46 and height be 10. Now इसको मैं initialize कर रहा हूँ in a variable name t field और इसको भी मैं pack कर लूंगा. Now let us run it again and this is how the interface looks now. यहाँ पर user will enter the city name and then he'll click on this button which is check weather and यहाँ पर उसका output create हो जाएगा. और let us do one more thing. Between this button and text field, let us create one more label जिसको हम लोग place करेंगे root पर with the text as the weather is, let its font be Arial, size be 12 and style be bold. And इसको मैं initialize कर रहा हूँ in a variable name weather now. Now इसको भी pack कर लेते हैं with padding along y axis be 10. And अब इसको रन करके देखते हैं. And now it looks pretty decent. So this is the whole front end of this application. Now let us start building its backend. Now backend को start करने से पहले let us talk about Tkinter built-in programming types. ये नॉर्मल पाइथन वेरिएबल की तरह वर्क करती हैं बट इट हैज सम एडिशनल फीचर्स जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं टू मैनिपुलेट द वैल्यूज ऑफ विजेट्स एंड दीज एडिशनल फीचर्स मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम पाइथन डेटा टाइप्स. इन वेरिएबल्स में गेटर एंड सेटर मेथड्स भी होते हैं जिनका यूज कर सकते हैं टू एक्सेस एंड चेंज देयर वैल्यूज एंड स्ट्रिंग वेरिएबल इज एन एग्जांपल ऑफ दिस वेरिएबल्स.
कोई भी वेरिएबल जिसको डिफाइन किया गया है यूजिंग स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग को होल्ड करेगा वेयर वी कैन सेट टेक्स्ट वैल्यू एंड हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं. So here let us define a variable city value using string var. हम लोग इसे एंट्री विजिट के टेक्स्ट वेरिएबल पैरामीटर में भी पास कर सकते हैं, जिससे इट विल ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड विद द न्यू वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल. So here in entry widget, let us write text variable equals to city underscore value. Now let us define a function named show weather, and यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ API जिसमें I'll pass my API key. So यूजर जिस भी स्ट्रिंग को एंट्री विजिट के अंदर एंटर करेगा that will be stored in this variable which is city value. And now what we will do is कि हम लोग इस वैल्यू को obtain कर लेंगे using get method. And this वैल्यू को मैं स्टोर करूंगा in a variable name city name. Now अगर हम लोग वापिस अपने API डॉक्यूमेंटेशन पर जाएं तो यहाँ पर you can see that they have mentioned how to make an API call. So we can use this link if we have latitude and longitude. और अगर नीचे आए so we can see यहाँ पर we have many different links. इसका हम लोग यूज कर सकते हैं. We have city name, then we have city name and country code, then we have city name, state code and country code. And because हम लोग city name से ही fetch out कर रहे हैं, so I'll copy this one. So let us take a variable name weather URL, and यहाँ पर मैं इस URL को store कर दूंगा. Now because it is a formatted string, so we'll write f here, and हमने city name को store किया है in the variable name city underscore name, so let us update it here. And API को हमने store किया है in a variable name API, so we'll update it here as well. Now let us send a data request to this website using request module weather URL. And इससे जो भी डेटा fetch होगा उसको मैं स्टोर करूंगा in a variable name response. Now again अगर हम लोग API document पर आए तो here you can see that it provides data in JSON, XML and HTML format. So let us write weather info response.json, जिससे we can change the response to Python readable. Now documentation के according अगर COD की value in this weather info is equals to 200, it means कि data successfully fetch out हो चुका है. So let us take an if condition. If weather info and COD equals to 200, then only we will move ahead. Now यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ Kelvin, जिसकी वैल्यू को मैंने 273 सेट किया है, एंड इसका मैं यूज करूंगा टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टू सेल्सियस. सो लेट अस गो बैक टू द डॉक्यूमेंटेशन, एंड हियर यू कैन सी दैट आउटपुट डेटा को किस वे में स्टोर किया गया है. फॉर एग्जांपल वी हैव अ कॉलम नेम्ड कोऑर्डिनेट्स जिसमें वी हैव द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. देन वी हैव अ कॉलम नेम्ड वेदर जिसमें वेदर आईडी, वेदर मेन एंड डिस्क्रिप्शन है. Similarly, we have main जिसमें temperature, temperature feels like, pressure, humidity, temperature minimum and temperature maximum जैसी वैल्यू stored है. So आप लोग चाहें तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, बट मैंने इन पैरामीटर्स को ऑलरेडी पढ़ लिया है. So let us directly go to our code. Now let us take a variable named temp, and इसमें मैं weather info के main कॉलम से temp कॉलम की वैल्यू में से Kelvin वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके स्टोर कर दूंगा. नाउ डेटा कौन से फॉर्मेट में स्टोर है, कौन से कॉलम में कौन सी वैल्यूज है, ये सब चीजें ऑलरेडी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया. सो इफ यू वांट टू फेच एनी डिफरेंट वैल्यू, आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को एक बार चेकआउट कर सकते हैं. नाउ इसमें टेम्परेचर को केल्विन में स्टोर किया गया था, सो आई एम सबट्रैक्टिंग दिस केल्विन दैट इज 273 फ्रॉम दिस टेम्परेचर वैल्यू, जिससे मुझे टेम्परेचर इन सेल्सियस मिल जाएगा. नाउ लेट अस चेंज इट्स डेटा टाइप टू इंट. नाउ लेट मी कॉपी दिस. And similarly, I'll store the value of temperature feels like, and for that, instead of temperature, यहाँ पर I will write feels like, और इसको मैं store करूँगा in a variable named temp feel like. Now let us fetch pressure by writing weather info
main pressure. Similarly, let us get humidity using weather info main humidity. Similarly, let us get wind speed weather info wind speed. Now यहाँ पर wind speed is in kilometer per hour, so let us convert it to meter per second by multiplying it with 3.6. Now let us get the sunrise time. Sunrise equals to weather info SYS and sunrise. And for sunset, we'll write weather info SYS and sunset. Now let's get the time zone by writing weather info time zone. Let us get the cloud information. Cloudy equals to weather info clouds all. Let us also fetch the description, which is equals to weather info weather index 0 and description. I think that is sufficient for this project. आप लोग चाहे तो और भी डेटा फैच आउट कर सकते हैं. Now ये वेबसाइट टाइम को एज UTC दैट इज यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सेट करती है, बट वी नीड टू चेंज इट टू द लोकेशन दैट वी आर इन. फॉर एग्जाम्पल आई एम इन इंडिया, तो मुझे टाइम UTC नहीं IST दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग चाहिए, विच इज GMT + 5:30. सो वी नीड टू मेक अ फंक्शन जिससे हम लोग टाइम जोन को चेंज कर पाएं. सो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ नेम करंट टाइम, which takes UTC as an argument. एंड यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डेट टाइम मॉड्यूल मैं लोकल टाइम को फैच आउट कर लूँगा यूजिंग UTC टाइम फ्रॉम टाइम स्टैम्प. एंड यहाँ पर आई विल पास UTC. नाउ इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ इन अ वेरिएबल नेम लोकल टाइम, एंड आई विल रिटर्न दिस लोकल टाइम. नाउ लेट्स गो बैक डाउन, एंड यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ नेम सनराइज टाइम, एंड यहाँ पर मैं करंट टाइम फंक्शन को कॉल करूँगा विद द आर्ग्यूमेंट एज सनराइज प्लस टाइम जोन. सिमिलरली लेट अस डू इट फॉर सनसेट एज वेल, एंड उसके लिए आई विल कॉपी इट एंड इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा. एंड हियर इंस्टेड ऑफ सनराइज आई विल राइट सनसेट, एंड इसको मैं स्टोर करूँगा इन अ वेरिएबल नेम सनसेट टाइम. Now we have all this data in all these different variables, so let us store it in a single one. And उसके लिए मैं ले रहा हूँ एक वेरिएबल नेम weather, and यहाँ पर I'll take formatted strings, and यहाँ पर मैं लिखूँगा weather of value will be city name backslash and temperature bracket में Celsius with the value temp backslash and feels like Celsius with the value temp feels like backslash and pressure with the value pressure in HPA backslash and humidity and the value of humidity in percentage backslash and wind speed with the value of wind underscore speed backslash and sunrise at with the value of sunrise time and sunset at with the value of sunset time backslash and cloud and the value of cloudy in percentage backslash and info, and here we will write value of description. Else weather equals to formatted strings backslash n backslash t weather for city name
not found. \n/t, please enter valid city name. So if the value of COD is 200, that is अगर data successfully fetch out हो चुका है, then we will print all these values. Else अगर data fetch out नहीं हुआ है, so we will print the message whether for the city name not found, please enter a valid city name. Now let us insert these values to our text field, जिसको हमने t field variable के अंदर initialize किया था. So we'll write t field dot insert and we will insert the value of weather. Now इससे ये सारा रिस्पॉन्स टेक्स्ट फील्ड पर डिस्प्ले हो जाएगा, बट फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ न्यू सिटी हमें प्रीवियस डेटा को इरेज करना होगा. सो टू क्लियर द टेक्स्ट फील्ड फॉर द न्यू आउटपुट, हियर वी विल राइट t field dot delete. Let there be index 1.0 and end. Now let us run it. Let me enter the city name as Dehradun. Let me click on check weather. And इसने कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं किया है, and that is because we haven't called the function yet. So let's go back. And function को हम लोग कॉल करेंगे whenever the button is pressed. And Tkinter में हम लोग function को simply parenthesis टाइप करके कॉल नहीं कर सकते हैं. Instead here we use command keyword to call our function. We will write command equals to show weather. अब इसको रन करके देखते हैं. Let me enter the city name as Pathankot. Let us click on check weather and it generates an error on attribute error of none type object has no attribute delete. T field dot delete 1.0 end. T field dot insert weather. What's wrong with this? Okay, we cannot do this here. Guys, text field ko we cannot pack like this. We need to write t field dot pack. Now let us run it again. Let us enter the city name Pathankot. Let us click on check weather. And this is the result जो इसने fetch out किया है. So that's it from this video, guys. I hope you like this one, and if you do, kindly give it a thumbs up, share it with your friends, and forgot not to subscribe to our channel. If you have any doubt related to any of our project, you can contact me on my Facebook and Instagram handles. Link in the description box. Also check description box for the source code of this project and link to our other YouTube videos as well. This is Akshay signing off.